Okay, so let's start. First of all, don't message me on Gajendra Kumar ID. Rather, I am sending a message. You should message me here. Don't send any message to co-host named as Gajendra Kumar. Okay, because I'm not able to see any of the messages क्योंकि मैंने screen share किया है उसमें. So let's start. Today we are going to revise sequence and series, and I have with me some questions of previous year JEE Advanced. We will discuss that sequence and series mein. So let's start with the basic concept quick revision, because the concept is not very much important, but the practice in this particular chapter, because in each and every exam you will find at least one or two questions from this chapter. So definitely this chapter is very, very important. So the first concept is arithmetic progression, and you all know what is arithmetic progression. If the terms are like a plus d, a plus 2d, and so on, called arithmetic progression. Definition wise, if I say, then product of two consecutive, difference between the two consecutive term is constant, is called arithmetic progression. Here a is termed as the first term and d as common difference, CD. So nth term of this is given by a plus n minus 1 into d. A plus n minus 1 into d. Say, if I ask you what is the 10th term, so you can say 10th term is a plus 9d. If I ask you what is 15th term, you can say it is a plus 14d, and so on. Now, for an AP, the summation formula is, say, a plus d plus a plus 2d up to n terms, and the n terms is a plus nth term is a plus n minus 1 into d. This is also denoted by Sn, and this Sn is equal to number of terms by 2. 2a means twice of the first term plus n minus 1 times of d. 2a plus n minus 1 into d. Okay. 2a plus n minus 1. ये हो गया आपका Sn. Sn equal to 2a plus n minus 1 d. Okay. If sum of three terms are given to us, sum of three terms, then we take three terms as a minus d, a, and a plus d, such that if we add them together, d will get cancelled out and we will get 3a. If we have five terms, then we can take a minus 2d, a minus d, a plus d, and a plus 2d, and a plus 2d. So these are the terms that we take if we have summation of three terms is given or summation of five terms is given. If summation of four terms are given, then we take a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, and so on. You have to be very, very careful, because here a is not the first term, d is not the common difference. Rather, common difference is 2d here. Similarly, in the first case, a is not the first term, a is the middle term here, and d is the common difference. So this is about AP. Then GP is defined as, say, we have first term as a, then AR, then AR squared, and so on. Nth term is given by AR to the power n minus 1. So if I ask you what is the 10th term, you will tell me it is AR to the power 9. If I ask you what is 15th term,
you will tell me a r to the power 14 and so on. So this is called GP. Basically, the definition is the ratio of two consecutive terms is always constant. And that constant is called the common ratio. A is the first term and R is the common ratio. These two are the main parameter which define this particular geometric progression or GP. Now summation, its sum to the n terms is given as a r to the power n minus 1 by r minus 1. This is sum up to the n terms. If we have a decreasing GP means mod r less than 1. If we have decreasing GP, then in that case, we can find summation up to the infinite term, and it is a upon 1 minus r. It is a upon 1 minus r. So this is possible only when mod r is less than 1. Please go through this once before we start the question, because today we are going to focus mainly on question, and I would like you guys to solve the question. Okay, so now I'm starting with the question. This is the first question. And again, I'm sending a message on where you should message me. So take your time. Yes, you will get the recorded lecture link in message after some time. First of all, try to find out from the given information whether it is in which sequence. Can you guys message me from this information what you can figure it out? इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है?
Vikrant, correct. It is an AP. It is an AP, correct. So from the given information, we can say that it is in AP. क्या आप लोग ट्रैक कर रहे हो या मैं आंसर दूं अभी? ओके विक्रांत, डोंट वरी. बाकी लोग बोलो, आप लोग ट्राई कर रहे हो? Okay, so now let me see this. First of all, this question. So this question came in JEE Advanced 2010, paper 2. Topic is definitely sequence and series. So let's see how to attempt this question. First thing is this information. If we rewrite this information, what we will get? AK plus AK minus 2 is equal to twice of AK minus 1. That means they are in arithmetic progression. Here AK minus 1 is the middle term and it is the arithmetic mean of the two terms. That means they are in arithmetic progression or in AP. A1, A2, A3, they are in arithmetic progression or in AP. Okay. Next, we will see A1 is given to us as 15. Okay. A1 is given to us as 15. Then A2 we can define as 15 plus D. Here D is the common difference. A3 we can define as 15 plus 2D and so on and so on. Now look at the given information. What given information we have? We have given information as A1 square plus A2 square dot A11 square
by 11 is equal to 90. So we can rewrite this information as a1 square plus a2 square plus dot 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 plus a11 square is equal to 990. 90 into 11, which is equal to 990. Now we know the value of a1 square. So now a1 square, let it be. A2 we can write as a1 plus d whole square and so on up to a11. A11 means a1 plus 10d whole square, which is equal to, this one is equal to a1 square, how many times? 11 times. How many times? 11 times. Plus, next what we will get? D square. If we take common, we will get 1 square plus 2 square plus dot dot dot, लास्ट में आएगा हमारा 10 square times D. And then if we take 2AD, A1D common, 2A1D common, then we will get 1 plus 2 up to 10, and this whole value is given to us 990. This whole value is given to us 990. Since we know that A1 is equal to 15, ये दिया हुआ है अपने को, A1 का value 15 है. So place this value here. A1 का value यहाँ पे हम लोग place करेंगे. So 11 into 15 square means 225 plus D square into 1 square plus 2 square up to 10 square. ये क्या बन जाएगा आपका? 10 into 11 into 21 by 6. Why? Because we know that 1 square plus 2 square plus dot 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 up to n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. In this formula only, we will put the value of n equal to 10 and we'll get this. So this should be D only. Yeah, D. This D should not be. Plus twice of A1D. A1 is equal to 15. So we'll get 30D. 30D. Sorry. 30D is equal to 990. Is equal to 990. So now when we further simplify it, we will get, say, this is 5, 3, this is 7. And when we further simplify it, we will get 5 7 ja 35 divided by 11. We should write here something. One term is missing here. One term is missing. Let me write in black so that you get this one. Twice of A1D तो हो गया. 1 plus 2 plus 3 up to 10 हो जाएगा आपका 10 into 11 by 2. Cancel it 5. This is equal to 990. So throughout we can divide by 55. Yes. So now in all total we can divide it by 55. 55 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 35. 11 से डिवाइड करने से 11 5 जा 55. 11 5 ja 55. Yes. So we will get 7 times of D square. The equation we will get 7 times of D square plus 30D plus 27 is equal to 0. Or when we factorize it, we will get
D plus 3 or 7D plus 9 is equal to 0. It will give us two values of D. D equal to -3 or D is equal to -9/7. We have got two values of D. Now, one information that we have not used yet, and the information is 27 minus 2a2 is more than 0. This information. So this will help us in cancelling out one of the value of D. D का दो value आ रहा है तो one of the value. Now, let's suppose in the first case, a2 क्या हो जाएगा हमारा? a2 हो गया 15 minus 3 is equal to 12. Now, as per the given condition, 27 minus 2a2 is more than 0. 27 minus 2a2, so twice of 12 is more than 0, which is not possible. Sorry, 27 minus 2 is more than, yes, which is possible. So we will take D equal to 3, minus 3. When we take D equal to -9/7, we'll get that 27 minus 2a2 is less than 0. So we have got the value of D, that D equal to -3. D का वैल्यू हमारे पास आ गया अभी -3. अभी ये लोग क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा a1 प्लस a2 a11. तो आपके पास अभी क्या आ गया? फर्स्ट टर्म आ गया. फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 15. कॉमन डिफरेंस D क्या मिल गया? -3. तो S11 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 11/2 2a plus n minus 1 means 10 times of -3. Or we will get S11 by 11 is equal to 30 minus 30 by 2, which is equal to 0. So answer to this question was numerical value question, and answer to this question is 0. Answer to this question is 0. Please take 1 minute time. This was a good question of JEE Advanced. तो 2 मिनट आप टाइम लीजिए. आई एम गिविंग यू 2 मिनट टाइम. अंडरस्टैंड इट. कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए. आपको कहाँ पे दिक्कत है ये करने के लिए मैं पूरे इसको स्टेप में डिवाइड कर देता हूं, सो दैट इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू आस्क मी. स्टेप 1, ये स्टेप 1 है, इसमें कंफ्यूजन है तो ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया, ये दोनों लाइन हो गया स्टेप 4, ये हो गया स्टेप 5, ये ब्लू वाला हो गया स्टेप 6, ये हो गया स्टेप 7 जिसमें हमने एक को हटा दिया है, और ये हो गया फाइनल स्टेप, स्टेप 8. किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है प्लीज मैसेज मी. किसी भी इसमें स्टेप में. आई एम गिविंग यू 2 मिनट टाइम. मैं एक मैसेज किया हूं, मैसेज मी करके ऑल ऑफ यू. आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज मैसेज ऑन दैट प्रोफाइल ओनली. डोंट मैसेज ऑन गजेंद्र कुमार co-host ID. I am not able to see that. So should we move ahead? कुछ लोग मुझे मैसेज करो अगर समझ में आ गया तो, so that I can move ahead. विक्रांत ओके.
Okay, so let's move to the next question. Next, this one. You may need to do some trial and error in this question. So don't hesitate from that. Only thing you need in this question is 1 plus 2 plus 3 up to n, sum up to the n terms, that is n into n plus 1 by 2. You all know 1 plus 2 plus 3 up to n is equal to n into n plus 1 by 2. And then slight trial and error. A pack contain n cards numbered from 1 to n. That means 1 plus 2 plus 3, that will be the sum of the pages. No?
So should I solve it or you guys are trying it? Okay, Vikrant, try. I want you guys to solve this. Okay, 1 minute more, then I will try. Okay, so now let me try. Arpit, very good. Correct answer. So you, this is the question which came in JEE Advanced 2013, paper 1 again. So I'm giving you 1 minute more time.
Okay. So this question came in JEE Advanced 2013, paper 1. Question says that a pack contain n cards, numbered from 1 to n. Two consecutive numbered cards are removed from the pack, and sum of the numbers on the remaining cards is 1, 2, 2, 4. So the card has numbering 1, 2, 3, and so on till n. In this, there are two cards, they are removed, and they are consecutive cards. Two consecutive cards are removed. So one card, let's suppose the removed card is K, and the other card is K plus 1. These two cards are removed. So sum of these cards must be 1 plus 2 plus 3 up to n. Summation must be equal to 1 plus 2 plus 3 up to n. But we have removed two cards, numbering K and K plus 1. So subtract it, 2K plus 1. This is given to us 1, 2, 2, 4. In the information, this is given to us 1, 2, 2, 4. Now we need to do slight trial and error here. We know that this summation we can write as n into n plus 1 by 2 minus 2k plus 1 is equal to 1224. Now, slight observation, slight trial and error, we need to figure out that for what value of n, summation of up to n terms, or this value is closer to this. So this is basically n into n plus 1. n into n plus 1 means n square और उससे थोड़ा ज़्यादा number होगा, divided by 2 is 1224. तो 1224 को अगर 2 से multiply करेंगे हम लोग तो किसके आसपास आएगा? 2500 के आसपास. So n का approximate value 47, 48, 49, 50, 51 इसी सब के आसपास कुछ होना चाहिए. So we'll start with trial and error and we will take n equal to 50 just to check कि 50 से कितना आगे कितना पीछे. So if we take n equal to 50 तो हमें मिलेगा 50 into 51 by 2, which if we solve we will get 1275. We will get 1275. That means 1275 minus something is equal to 1224. So 1224. We got 51. This 51 is contributed by 2k plus 1. That means 2k plus 1 हो गया आपका कितना? 51. और k कितना हो गया आपका? 25. That means ये 50 हो गया n का वैल्यू. n का वैल्यू 50 हो गया, k हो गया आपका 25 और k plus 1 हो गया 26. So we have removed two cards numbering 25, 26. आपसे पूछ क्या रहा है? If the smaller of the numbers on the removed card is k, तो हमने smaller number k है तो k minus 20 पूछ रहा है. So 25 minus 20 कितना हो जाएगा? 5. So correct answer is 5. In this case, if you look at carefully, we have got n equal to 50. n equal to 50 मतलब क्या है कि नंबर कहां से कहां तक है? 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू 50. इसमें से हमने दो कार्ड रिमूव कर दिए. कौन कौन से कार्ड? 26 and 25. And then when we added, we got summation as 1224. So k equal to 25 and k minus 20 is equal to 5. Correct answer is 5. I am giving you 1 minute time. Try to understand. कुछ confusion है तो बोलिए. Take 2 minute time. Understand it. कैसे try and error use करते हैं JEE Advanced के क्वेश्चन में.
All of you got it? Should I move ahead? Aditya, yes, sure, Babu. How I found n? Na? Aditya, एक बात देखो आप, n into n plus 1 by 2 minus something is 1224. That means n into n plus 1 क्या होगा? 1224. 1224 and into 2 मतलब 2500 के आसपास जा रहा है ना. तो n का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं? 50 के आसपास होगा. 50 स्क्वायर 2500 होता है. तो मैंने n को 50 लेकर ट्राई किया. और देखो जेई एडवांस ने क्वेश्चन दिया है, वो चाहता है कि उतना ज्यादा ट्राई एंड आप मत करो. अगर 50 नहीं मिलता तो 51 या 49 या 50 इतने में आ जाता आपका आंसर. Okay, Aditya. So should we move ahead? If you guys are able to understand it properly, very good, because these are JEE advanced questions, not the main questions. Next question is this one. Try to understand this question first properly. Two-minute time more.
JEE Advanced 2013, paper 1. Okay, Vikrant, I'm waiting. One minute more, then I will start. Okay, so now let me start. So this question came in JEE Advanced 2013, paper 1. Question says that Sn sigma k equal to 1 to 4n minus 1 raised to k plus 1 by 2 into k square. तो जनरली बच्चे इसको देख के ही डर गए कि पता नहीं ये क्या है, ऐसा टाइप दिख रहा है. Whenever you see sigma, try to simplify it. सिग्मा को ब्रेक करके समेशन के फॉर्म में लिखो. आई बिलीव आप इजिली समझ पाओगे. तो फर्स्ट टर्म क्या होगा जब k इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम लोग. जब k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका -1 to the power 1 into 2 by 2 into 1 square. That means -1 to the power 1 into 1 square. That means minus of 1 square. Now you put k equal to 2. अगर आप k equal to 2 पुट करोगे तो क्या होगा -1 to the power 2 into 3 by 2 into 2 square, or -1 to the power 3 into 2 square, or you will get -2 square. Many students, they have done mistake in hurry that they have understood that always you will get minus sign here, और उन्होंने simply -1 square plus 2 square plus 3 square कर दिया, और ये गलती हो गई. क्योंकि अभी देखिए k equal to 3 लेंगे अगर हम, then what we will get
-1 to the power 3 into 4 by 2 3 square, or -1 to the power 6 into 3 square, or we'll get plus 3 square. तो 2 माइनस आया, फिर एक प्लस आया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग k इक्वल टू 4 पे। तो k इक्वल टू 4 लेंगे, फिर से हमारा हो जाएगा -1 रेज टू 4 इंटू 5 बाई 2 इंटू 4 स्क्वायर। दैट मीन्स -1 to the power 10 into 4 square. That means plus 4 square. नेक्स्ट आ जाएगा आपका -5 स्क्वायर। सो दिस इंटायर समेशन सिग्मा, ये क्या दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -5 स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। मीन्स 2 बार माइनस 2 बार प्लस, माइनस डॉट 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 अप टू n, अप टू 4n, सॉरी अप टू 4n। सो अभी मैं इन दोनों को कैसे क्लब करता हूं, देखिए, एक माइनस और एक प्लस, इन दोनों को साथ में लिया मैंने, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर। फिर मैंने इन दोनों को साथ में लिया, 2 और 4 को, तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर। फिर मैं इन दोनों को साथ में लूंगा, 5 और 7 को, तो मैं क्या लिखूंगा? 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर। फिर मैं 6 और 8 को साथ में लूंगा, 6 और 8 को, तो क्या लिखूंगा? 8 स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। अभी 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 3 + 1 × 3 - 1, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ट्वाइस ऑफ 3 - 1, ट्वाइस ऑफ 4 बन गया ये, 3 + 1 × 3 - 1, ठीक है। 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर है, सो ट्वाइस ऑफ 4 प्लस यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस, सॉरी 2 स्क्वायर यहाँ पे होगा, 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर मतलब 4 + 2 × 4 - 2, तो 2 कॉमन हो गया, तो क्या बन जाएगा ये? फिर 6। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लेंगे तो 7 + 5 12। फिर क्या हो जाएगा? 8 + 6 14 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा अप टू 4n टर्म्स। ये आपका चलता जाएगा अप टू 4n टर्म्स। तो ये हो जाएगा Sn। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग Sn को, तो Sn अभी नॉर्मल ये AP के फॉर्म में आ जाएगा, नॉर्मल AP। तो Sn को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास Sn आ जाएगा आपका, AP का समेशन करेंगे तो Sn आ गया 4n × 4n + 1, 4n × 4n + 1। ये 4 के बाद एग्जैक्टली ये रिपीट करना शुरू करेगा, साइकिल फॉर्म करेगा। Sn हो जाएगा 4n + 1। अभी Sn कैन टेक, Sn का क्या क्या वैल्यू हो सकता है ये हमें देखना होगा, और ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको क्वेश्चन देख के समझना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज दिया हुआ है, मतलब 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें अगर n का वैल्यू हम लोग 8 पुट करेंगे तो S8 हमारा आ जाएगा 32 × 33, that is 1056. So this is one of the possible value, option A। अगर s का वैल्यू, n का वैल्यू हम लोग 9 पुट करेंगे तब आ जाएगा S9 = 36 × 37, that is 1332। Option D is correct. So option A and D, these two options are correct here। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये 4 के बाद रिपीट कर रहा है, तो 4 6 12 14 आया,
नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म हमारा आएगा -9 रहेगा एंड 12 रहेगा। मतलब नेक्स्ट टर्म अगर इसको लिखेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा -9 स्क्वायर -10 स्क्वायर +11 स्क्वायर -12 स्क्वायर, ये आएगा। तो 9 - 10 तो फिर से हमारा हो गया 11 और 9, इन दोनों को क्लब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा एंड 11 + 9 नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म जब हम इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इस तरह से एक ये सीरीज फॉर्म करेगा, ठीक है, जिसका समेशन आपका आ जाएगा Sn = 4n × 4n+1। देखिए मोस्टली इस क्वेश्चन में क्या था कि बच्चे सिग्मा और इस टर्म को देख के डर गए थे। ये ट्रायल एंड एरर क्वेश्चन है बाबू, मतलब कि देख रहे हो जेईई एडवांस में कितने ट्रायल एंड एरर क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब n का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके हम चेक करेंगे कौन सा वैल्यू उसके आसपास आ रहा है। तो 4n × 4n+1 मतलब ये भी अब क्या होगा, एक स्क्वायर के आसपास होगा। 32 स्क्वायर होता है 1024, 32 स्क्वायर। तो n का वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे कि 4n 32 के आसपास रहे, तो n का वैल्यू हमने क्या लिया, 8 लिया है इसमें, n = 8 लिया इसलिए। जब n 8 आ गया, अब अगला ऑप्शन देखो 1300 है, तो अब n = 9 लेके चेक कर लेते हैं। अब 8 और 9 इस दोनों के बीच में है, तो अब ये दोनों चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 8 और 9 के बीच में ही वैल्यू आ गया है इन दोनों का, तो ये दोनों कभी पॉसिबल ही नहीं है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ABC इज B+2। सॉरी, अर्थमेटिक मीन ऑफ ABC इज B+2, ये दिया हुआ है। टू मिनट टाइम मोर।
मैं ट्राई करूं अब। जेई एडवांस 2014 पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। ओके, अब मैं ट्राई करता हूं तो इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो एज यू सी, this question came in JEE Advanced 2014 paper 1, and the question is, let A, B, C be positive integers. Be very careful. A, B, C are positive integers. मतलब आपके क्वेश्चन को बहुत इजी कर दिया इन्होंने। And B by A is an integer. दोनों का रेशियो भी इंटीजर है। If A, B, C are in geometric progression, अच्छा जी, A, B, C है geometric progression में and B by A का इंटीजर है। What does it mean? It means that the common ratio is also integer. So can we assume as A तो A ही बन गया, B equal to हम लोग assume कर सकते हैं AR and C is equal to assume कर लेते हैं AR square. Here you have to remember that A and R both are integer. ये बहुत important है। A and R both are integer as per the given condition. ठीक है, A and R both are integer. तो अब इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है आपको? अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी प्लस 2। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू बी प्लस 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 3a, नॉट 3a, सॉरी, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3b प्लस 6। फर्दर सिंप्लीफाइड, b को LHS में ट्रांसपोज कर दीजिए तो आ जाएगा a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 6। अब हम लोग केवल दो वेरिएबल में लेके आ जाएंगे, a एंड r। सो वी कैन राइट इट एज a माइनस b के जगह पे ar एंड c के जगह पे ar स्क्वायर। दिस इज गिवन टू यू एज 6। और वी कैन टेक a कॉमन। अगर a कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 6। और वी कैन राइट a, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, r माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। मैंने बोला था याद रखने के लिए कि a and r both are integers और r minus 1 whole square है। That means r minus 1 whole square must be a factor of 6। इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से तो 6 बन रहा है। So only possibility that r minus 1 whole square is 1 and a is equal to 6. r minus 1 whole square is 1, that means r is equal to 2। आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है? r equal to 2 and a is equal to 6. So the possibility you have is r equal to 2, a equal to 6. You do not have any other possibility. Next, a का वैल्यू आ गया। What is being asked here? A square plus a minus 14 by a plus 1। इसमें a equal to 6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। So 36 plus 6 42 minus 14 by 7. So 28 by 7. 4 is the correct answer. So answer to this question is 4. देखिए किसी को कहीं पे कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए।
I am giving 1 minute time to understand. ठीक है? Okay, so now I am moving ahead with next question. One minute more, then I will start. As far as I'm concerned, this is 2015 paper 2. अभी बड़ा कर दिया so that you guys can see and try once more. 1 मिनट का टाइम.
Okay, so now let me try this question. This question came in JEE Advanced 2015 paper 2. So the question says, suppose that all the terms of an arithmetic progression means AP are natural numbers. Very, very important. Natural number means first term A is natural number, common difference D is also a natural number. So this is very, very important information. If the ratio of sum of the first 7 terms to the sum of first 11 terms is 6/11. What do you mean by this? That means S7 by S11 is equal to 6/11. From this, what we can conclude, first term A common difference D अगर assume करते हैं, तो S7 क्या हो जाएगा हमारा 7/2 2A plus 6D and 11th term हो जाएगा हमारा 11/2 2A plus 10D, and this ratio is given to us 6/11. So if you look at carefully, we can cancel out this 11, this 2. So what we will get from here, 2A plus 6D by 2A plus 10D is equal to 6/7. इस 7 को हम लोग इसके नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, 6/7 हो जाएगा. Now if you cancel out by 2 numerator denominator, what you will get, A plus 3D by A plus 5D is equal to 6/7. Cross multiply it, what you will get, 7A plus 21D is equal to 6A plus 30D. और A को transpose करो, D को उधर transpose करो, you will get A equal to 9D. So this is the information we have got till now. Now read the question further. 6/11 यहाँ तक हमने decode कर लिया. उसके बाद क्या है? And the 7th term lies in between 130 and 140. 7th term क्या होगा? T7 is equal to A plus 6D. Instead of A, we can replace with 9D. So we'll get 9D plus 6D or 15D. ये हो गया 7th term. But information क्या दिया हुआ है? 15D is less than 140 but more than 130. So 15D, D is a natural number, is lies between 130 and 140. Only possible value of D here is 9. Because 15 into 9 is 135. So the correct answer to this question is 9. Correct answer is 9. विक्रांत, आपका आंसर सही था, एकदम सही था आपका आंसर. चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं. जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लाइन.
दो में 1 मिनट और दूंगा मैं। Okay, now let me try. This question came in JEE Advanced 2018 paper 1. Question says that let X be the set consisting of the first 2018 terms of arithmetic progression 1, 6, 11, so on. So the term is 1, 6, 6 plus 5, 11, 11 plus 5, 16, 16 plus 5, 21, and so on till 2018 terms. Till 2018 terms. Next is 9, 16, 23 is the set Y. So what set Y is 9, 16, 23, 30, so on. This one is also up to 2018 terms. Then the number of elements in X union Y is. So number of elements in X union Y is number of elements. This is equal to number of elements in set X, which is 2018, plus number of elements in set Y, which is also 2018, minus number of elements in X intersection Y. Means elements which lies in this series as well as in this series. अगर आप देखिएगा क्लियरली 16 तो एक टर्म दिख ही रहा है जो कॉमन है, इसके बाद भी टर्म्स कॉमन होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस सीरीज. फर्स्ट सीरीज का nth टर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5n-4, ये एपी का टर्म है, तो 5n-4 nth टर्म है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5n-4, 5n-4, ये हो गया. अब n का वैल्यू आप 2018 अगर पुट करेंगे इसमें, तो ये आपका कितना बन जाएगा? 10090 minus 4, which is equal to 10086. तो सेट x का लास्ट वाला है 10086. सेकेंड सेट का देखिए आप, तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा? इसका nth टर्म हो जाएगा आपका 7n+2. ये भी एपी में है, 7n+2. इसका 2018 टर्म क्या हो जाएगा? 7 into 2018 plus 2, which is 14128. तो डेफिनेटली इससे बड़ा है. जो कॉमन टर्म होगा that must be less than 10086. Now the most important concept here is, एक कॉमन टर्म तो आपको मिल गया 16. नेक्स्ट कॉमन टर्म क्या होगा? तो इसके जो कॉमन टर्म्स होंगे ये भी आपके एपी में होंगे. इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 5. इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 7. तो जो इन दोनों का कॉमन टर्म्स होगा उसका कॉमन डिफरेंस होगा एलसीएम ऑफ 5 and 7, 35. दैट मींस नेक्स्ट टर्म होगा 35 plus 16, 51. उसके बाद वाला टर्म होगा 51 plus 35, क्या बन जाएगा? 86, एंड सो ऑन. अब हमें निकालना है कि ऐसे कितने कॉमन टर्म्स होंगे. तो इस सीरीज का
जनरल टर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जनरल टर्म लिख सकते हैं 16 प्लस m माइनस 1 टाइम्स 35. 16 इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, 16 is the first term, and then we have, yes, always you should find the LCM and then you should calculate it. Okay, you should find LCM and then you should calculate it. So 16 m minus 1, it should be less than equal to 10086, or m is less than equal to, if you get, then 10070 by 35, which is approximately 288 point something. That means m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 288 नंबर ऑफ टर्म्स. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2018 nx प्लस 2018 minus 288, which is equal to 3478. So the correct answer is 3478. This was numerical type question and the answer is 3478. चलिए, तो आज के लिए टाइम हो गया है, हम लोग इतना ही पे इसको खत्म कर देते हैं अभी, ठीक है. एंड फिर अगले क्लास में आप लोगों का जो भी होगा उसको देखा जाएगा फिर, ठीक है. Okay, thank you very, very much to all of you. Okay, thank you. Thanks to all of you. Thanks, dear. Thanks. You can share your feedback in the given link. Thanks to all of you.